लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो इसके कमी है, वो सब मैंने यहाँ पे लिस्ट बिल्कुल नहीं किया है, वो सब पढ़ लेना, ड्राइंग, डेरिवेशंस, एवरीथिंग। डिस्क्राइब प्लम पुडिंग मॉडल। स्टार्टिंग पार्ट इज एटॉमिक मॉडल। तुमको 4 मॉडल्स पढ़ने हैं, थॉमसन्स, गीगर-मासन का सेटअप, रदरफोर्ड्स एंड बोर्स, बराबर। तो प्लम पुडिंग पूछा है, दैट इज ओनली द कुकी वाला मॉडल, दैट इटसेल्फ इज थॉमसन्स, सो दैट यू शुड नो। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल मतलब वो बोर्स के जो पोस्टुलेट्स है 3, फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकेंड वो एंगुलर मोमेंटम वाला, एंड थर्ड डेल्टा ई इज EM माइनस EN। तो डिस्क्राइब बोर्स एटॉमिक मॉडल मतलब यू हैव टू स्टेट द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। रिलेशन ऑफ आरएन, ये एक टाइम पीरियड का डेरिवेशन पढ़ोगे तो सब कुछ ही रिवाइज हो जाएगा। आरएन वीएन का तो डेरिवेशन पढ़ना ही है। ओमेगा एंड टाइम आर लेस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, but we are doing unexpected questions, so practice time period of electron, orbiting electron, time required to complete one rotation by the electron around nucleus। ठीक है, टाइम के डेरिवेशन में टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली के के फॉर्मूला से चालू किया है, बट इफ यू जस्ट ऐड के एंड पी, उसके लिए यू कांट गेट 4 मार्क्स, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डिराइविंग रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। Fine, and you cannot remember also K and P का formula. And potential energy, it is 1 upon 4 pi epsilon naught Z E square upon R। potential energy में R square नहीं आता है, force में square आता है, potential energy में it is only upon R। इन सबके फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्मॉल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वी नो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का ही मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। Rn is directly radius of the nth orbit is proportional to square of principal quantum number। linear velocity is inversely proportional to 1 upon n, formula में दिखेगा, omega is v by r, you get 1 upon n cube, and omega and time are inversely proportional, time period is directly proportional to cube of the orbit number। इसमें ग्रेविटेशन का t स्क्वायर मत लगा लेना, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ये चारों रिलेशंस अच्छे से दिमाग में फिट करके जाओ। Limitations, you very well know the postulates of Bohr's model, you have to equally stress upon limitations of Bohr's model as well। 3 postulate है, 3 limitation भी है। पहला limitation जो हाइड्रोजन छोड़ के बाकी के atoms है, it could not give explanation for spectral distribution of other atoms। intensities of emission lines, एक wavelength में भी there was intensity, amplitude was varying, Bohr's had no explanation for that, and हमने assume किया है कि ऑर्बिट करके कुछ होता ही नहीं है। हमने कौन सा ऑर्बिट माना जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम विल बी मल्टीपल ऑफ द ऑर्बिट इनटू h upon 2 pi, बराबर। सो दिस इज जस्ट अ वेग assumption, इसका कोई प्रूफ, एनालिटिकल प्रूफ नहीं है। ये सारे सिमिलर डेफिनेशंस में तुम खिचड़ी मत करना। Excitation energies of the electron, the energy required to take an electron from ground state to excited state, that is excitation energy। ionization energy or binding energy of the atom, both are same। the minimum energy required to be given to an electron from ground state to set the electron free from the atom, that is your ionization energy। इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है फ्रॉम द एटम, यू हैव टू सप्लाई आयनाइजेशन एनर्जी, उसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। एंड ये बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल के फॉर्मूला में माइनस आता है, विच इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड टू द न्यूक्लियस, एंड बाइंडिंग एनर्जी दैट इज जनरली पॉजिटिव। minimum energy required to be given to an electron, same है, ionization, binding energy both are same, but for the nucleus, if they are asking you to define binding energy of nucleus, if they have asked in the question only binding energy, by default they are asking for the electron,
न्यूक्लियस का है तो बोलेंगे कि डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस का क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस. एंड इसमें एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी था. तो इफ यू हैव टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन देन यू हैव टू सप्लाई एनर्जी विच इज इक्वल टू EB अपॉन mass number. EB is the total binding energy of nucleus. EB upon A is binding energy per nucleon. Binding energy of hydrogen atom, hydrogen nucleus दोनों का अलग है, वो लिखेंगे. If by default they have only said binding energy of hydrogen, समझ जाने का एटम की बात हो रहा है. हाइड्रोजन के पास तो ऐसे खुद का न्यूक्लियस है भी नहीं. So binding energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt and for the nucleus it is 0. टोटल में माइनस आता है, बाइंडिंग एनर्जी में माइनस आता नहीं है. वापस बोल रही हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर एटम न्यूक्लियस मेंशन नहीं किया है, दे आर टॉकिंग अबाउट एटम. न्यूक्लियस का कुछ भी पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन में न्यूक्लियस का वर्ड रहेगा. Nuclear density, it is not like as you go above the series of your elements, higher elements has higher nuclear density, ऐसे नहीं है. तुम छोटे से छोटे एलिमेंट का न्यूक्लियस पकड़ो, ड्यूटेरियम का ले लो या रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस ले लो, न्यूक्लियर डेंसिटी, दैट डेंसिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. इट इज अ वेरी टाइनी वैल्यू इन द रेंज ऑफ, नो इट इज नॉट टाइनी, इट इज वेरी ह्यूज. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज हैज अ वेरी हाई डेंसिटी वैल्यू. ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स इट इज कांस्टेंट, क्योंकि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं. एंड न्यूक्लियस मतलब इट इज ऑलवेज क्लोजली बाइंडेड करके वो न्यूक्लियस बना. स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ टू न्यूक्लियर. हायर EB अपॉन A मतलब हायर स्टेबिलिटी. द लीस्ट, वो जो ग्राफ था बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर, उसके कंक्लूजन्स का बोला था कि सम पार्ट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो द लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर यू शुड नो, हाइड्रोजन का 0 है. Hydrogen is not the least stable nucleus. The least stable nucleus is of deuterium, which is an isotope of hydrogen, and most stable nucleus is iron. Least is deuterium, most stable is iron. Isotopes, isotone, isobar, इसका definition भी sample papers में दिखा था. तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, these three definitions you have already written. We have also written it in equation form. तो go through this. ये तीनों डेरिवेशन छोड़ना मत. सेक्शन ए में क्या पता अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आजकल पूछ रहे हैं, बार बार मैं वही स्ट्रेस आउट कर रही हूँ. कॉजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी का शॉर्ट नोट जो भी ये चैप्टर पढ़ता है, they all study alpha, beta, gamma decay with the reactions. You would know it very well, but they can also ask you what is the reason behind radioactivity, that why do nucleus become unstable. तो unstable nucleus क्यों बन जाता है? Because of high electrostatic repulsion. If electrostatic force, the total magnitude of electrostatic force, if it exceeds nuclear force, it is going to undergo disintegration. Your nucleus will become unstable. So unstable nucleus is the main cause of radioactivity. Not even bigger size, even smaller small nucleus of certain elements are believed to be unstable. Why? Because due to unbalanced proton to neutron ratio. अगर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया as compared to proton or vice versa, then also your nucleus undergo disintegration. So the second reason is it tries to reduce the number of protons. If the ratio of mass number to atomic number is greater than 1, that is also a reason for your nucleus to become unstable. So ये दोनों reasons for radioactivity पढ़ लेना. डीके रिएक्शंस का समरी तो बना के दिया है. अल्फा का पता है, अल्फा मतलब ही हीलियम न्यूक्लियस.
A minus 4, Z minus 2, because helium has 2 proton, 2 neutron. Z is atomic number, A is mass number. बीटा माइनस डीके में, माइनस डीके है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, प्लस डीके है तो पॉजिट्रॉन बाहर आता है, बराबर। बीटा माइनस में Z प्लस 1 होता है, बीटा प्लस में Z माइनस 1 होता है. दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर. गैमा डीके में x ही रहता है, ओनली डिफरेंस इज गैमा माइनस कुछ नहीं होता है, इट इज गैमा डीके. ओनली गैमा रेज आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कोई पार्टिकल बाहर आता नहीं है. एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो का मास यू डू नॉट कंसिडर. ये याद रखो, बीटा माइनस, वापस बोल रही हूँ, बीटा माइनस मतलब x बन जाएगा y, यू विल गेट अ इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो. बीटा प्लस में x बन जाएगा y, यू विल गेट अ पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो. इसका जो एटॉमिक नंबर Z है, इसका A है. A और Z, बीटा माइनस में Z प्लस 1 होता है, बीटा प्लस में Z माइनस 1 होता है. मास नंबर नेवर चेंजेस इन बीटा डीके. फाइन, इट इज सिंपल टू रिमेम्बर प्रोवाइडेड यू हैव अंडरस्टूड दीज टाइप्स ऑफ डीकेस. फाइन. एंड न्यूक्लियर रिएक्शन से जो बाहर आता है दैट इज योर Q वैल्यू. Q वैल्यू क्या है? इट इज मास ऑफ products, mass of parent minus mass of product into C square. and ये mass में you don't consider neutrino and anti-neutrino. इसके हमने reactions वाले some MCQs we had done in class, go through that. Define half life, average life. half life you know to derive, ठीक है, बट हाफ लाइफ का डेफिनेशन भी पता रहना चाहिए एंड एवरेज लाइफ, दोनों अलग है. एवरेज लाइफ ढूंढने बोला है क्वेश्चन में, सम में, एंड यू आर कैलकुलेटिंग हाफ लाइफ, ऑब्वियसली यू विल लूज मार्क्स. हाफ लाइफ, हाउ डू यू डिफाइन? द टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई टू रिड्यूस टू हाफ इट्स क्वांटिटी, दैट इज हाफ लाइफ. इसका यूनिट सेकेंड्स ही है, या डेज, या आवर्स, या ईयर. T half का फॉर्मूला था 0.693, which is natural log of 2 upon dk constant. Lambda is your dk constant, which is in second inverse. Fine. And half life, it is the average life that the nuclei of radioactive substance exist. This is denoted by tau, and tau is 1 upon lambda. That is 0.693 upon lambda. This is 1 upon lambda. तो डेफिनेशन किसका पूछा है या न्यूमेरिकल में क्या ढूंढने बोला है वो ध्यान से पढ़ो. एवरेज लाइफ पूछा है कि हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज T हाफ, एवरेज लाइफ इज टाउ. SI यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बेक्वेरेल दूसरा यूनिट है, क्यूरी अदर यूनिट, इट इज नॉट द CGS यूनिट. अदर यूनिट इज क्यूरी. 1 becquerel is 1 dk per second. Activity you denote as Tn by dt only. And जो radioactivity है, AT is also equal to A naught e raised to minus law of decay n के terms में, but same n can be replaced with activity A also. Fine. तो becquerel is the SI unit of radioactivity. The other unit is curie. 1 becquerel, if they ask you to define 1 becquerel, आजकल कुछ भी पूछते हैं, define 1 becquerel. 1 becquerel is 1 nucleus gets disintegrated in 1 second. तो 1 decay per second is 1 becquerel. Fine, that's it. All the best for your boards. I'll be sending separate instructions in your WhatsApp group. Ki things, general instructions for physics paper. All the best. Be very calm and confident. Do very well. Okay, children?